Now, in this session, we are going to learn the poem Hope is Thing with Feathers, written by Emily Dickinson. Now, I have written 2 lines of the poem over here. I'll read the first stanza for you. Hope is the thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stops at all. Now, before explaining the poem, the first line itself, as well as the title of the poem, they are the same. Hope is the thing with feathers. See, as I have told you, I had explained you that in metaphor, there is direct comparison. Suppose if I say, you are the Shakespeare of the class. That means you have a very good ability to write. In that way, in this poem, the poetess, she compares the hope with the thing with feathers. Now, so the poem is extended metaphor. Now, metaphor, 2 things are compared. Okay, there are 2 things which are compared with each other. Now, the hope is compared to the thing with feathers. The poet does not say bird, but he means it as a bird. The thing with feather, he does not say that it is a bird, but as we proceed further, we come across the words like sing, perch, or the crumb, and then we come to know that it is a bird. So, he compares the hope with the thing with feather. Now, why he compares the hope with the thing with feathers? Because there is some similarity between the hope and the thing with feathers. Now, what is the similarity? Yes, what is the similarity? That the thing with feather is very soft. You know, feather is very soft, very light, very delicate, ekdam nazuk, very beautiful and pleasant. In the same way, the feeling hope is also very soft feeling. It is very delicate feeling. It's really a very beautiful feeling, and it is very, very pleasant feeling. Yes, now I will explain you a little bit in Hindi and Marathi that in this poem, इस कविता में hope की तुलना द थिंग विथ फेदर्स कि जिसे पंख है ऐसी चीज से की गई है. पोएट डायरेक्टली ऐसा कहता नहीं है कि पक्षी, बर्ड ऐसा कहता नहीं है, पर ऐसी चीज जिसे पंख है, सो वी अज्यूम कि वो पक्षी से तुलना करता है. क्योंकि जो भी वर्ड्स हैव कम, ओके, जो वर्ड्स आते हैं, दैट शोज दैट ही वांट्स टू रेफर टू अ बर्ड. उससे हमें पता चलता है कि वो बर्ड के बारे में बात कर रहा है. ना जब भी हम कोई 2 चीजों में तुलना करते हैं, तो उन 2 चीजों में कुछ तो साम्य होना चाहिए. और इसीलिए जो है द थिंग विद अ फेदर जो है, इट इज वेरी सॉफ्ट. वो बहुत ही मुलायम, बहुत ही नाजुक, बहुत ही अच्छा, प्यारी सी और बहुत ही मन को सुखद ऐसी अनुभव करवाता है फेदर वाली चीज. उसी ढंग से हमारी जो आशा है हमारे मन में, वह भी एक बहुत ही सुखद भावना है, बहुत ही नाजुक भावना है और बहुत ही अच्छी भावना है. एंड सो और इसीलिए ये जो पोएम है, दिस इज इन एक्सटेंडेड मेटाफर. ये सारी पोएम यह कंपैरिजन रखकर की गई है, ध्यान में रखकर ये पोएम लिखी गई है. एक्सटेंडेड मेटाफर, दैट इज इन द होल पोएम दैट कंपैरिजन हैज बीन मेड. अब दूसरी एक चीज जो टेक्स्ट बुक में बताई गई है, that is personification. Personification means what? That inanimate things are treated as if living things. यानी जिसमें कुछ जान नहीं है, ओके, नॉन लिविंग या एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स है जो हम देख नहीं पाते हैं, ओके, उसे वी ट्रीट देम एज अ लिविंग थिंग.
So in this poem, hope, Asha, it is a feeling. It is abstract. You cannot show, oh, just say you can show this is a chalk, but abstract which you cannot show. You can just feel. And that feeling is treated as a living thing. उसे जीवंत रहने के जैसे कंपेयर किया हुआ है, as if it is a bird, और ऐसे करके कविता लिखी गई है. So there is also the figure of speech personification in the whole poem. Now, as I told you, I'll explain you the first line. Hope is the thing with feather. It is very clear. The poet compares hope with, or the poet compares directly hope with the thing with feathers, that is the bird. Now, why he compares? Because hope is a very soft, light, delicate, beautiful and pleasant emotion, or the pleasant feeling, like the thing with a feather. Now the next line, that perches in the soul. That is the hope, the bird, the way the bird perch. Perch means to settle down. Perch word specially we use for birds. Roost, or you settle, or you sit on the branch. Okay, you roost, you rest. Okay, like that. The way the bird perches on a branch, in the same way, the bird of a hope that perches, that means it lives in our soul. यानी जो आशा है वो कहाँ रहती है? वह हमारे सोल में, हमारे आत्मा में होती है. And it is permanently. It lives there forever. हमेशा वो हमारे आत्मा में रहती है, यानी हमारे आत्मा में ही उसका घर है. Our soul is its home. Whether we are happy or we are unhappy, there is always hope. यानी हमेशा हम आशादायी रहती है. Okay? Such instinct we have, inborn instinct. यानी हमारे में जन्मजात यह एक भावना है. आशा यह एक भावना होती है जो हमारे मन में या हमारे आत्मा में होती है. I hope you have understood both the lines. Hope, being a bird, it sings. Okay, so the poet says, and sings the tune without the words. But how the hope sings? It sings the tune. There is tune, okay? एक संगीत है, एक लय है. But without the words, there are no words. The poetess wants to say that hope is such a feeling that you cannot express through the words. वो जो ऐसी भावना है कि जो आप शब्दों के द्वारा बता नहीं सकते. You cannot express it. So there is a tune, but there are no words. It cannot be understood through words, but it is a feeling beyond the words. यानी शब्दों के परे है उसको समझना. And so the poet says, this bird, it sings the tune. It sings, okay, it is there in our heart. But without the words, उसके कोई शब्द नहीं है. The fourth line is, and never stops at all. Okay, and never. See, the word is never. At all. That means it never stops its singing. उसका जो गाना है वह कभी रुकता नहीं है. Never. See, the word is used never. कभी नहीं. Why? Never leaves. That means hope. It is always with us. Whether it is good time or bad time. अगर हम आनंदित है या हम दुखी है, होप या आशा या उम्मीद हमेशा हमारे साथ रहती है. It never leaves us. It always accompanies us and it comforts us. और हमें वह comfort करती है, हमें आराम दिलाती है, हमें सुकून देती है. So it never stops at all. That means it is always with us. The hope is always with us. Hope हमेशा हमारे साथ रहती है. Now this is the second stanza, and in the second stanza the poet points out that
whenever we find difficulties in our life, whenever we are going through the tough time of our life, that time hope plays a very vital role. Okay, and that's why I see if you read the first line, and sweetest in the gale is heard. Okay, now the sweetest, that means if we are in the gale, what is the meaning of the gale? That is, if you take word to word meaning, that is a very strong wind. Yes, word to word, if you take, the meaning is very strong wind. यानी ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड यानी बहुत ही जोरों से बहने वाली हवा. Yes, but now this the gale and the storm, they mean one and the same, but they are also used over here metaphorically. Okay, so metaphor is used for the gale and the storm. They represent difficult time or the problem. Okay, difficult times are expressed through the words the gale and the storm. यानी ये जो द गेल और द स्टॉर्म है, ये शब्द डिफिकल्टीज के लिए यूज किए गए कि हमारे जिंदगी में जो कोई डिफिकल्टीज आती है, दैट फॉर दैट these words represent those difficulties. So the writer says, or the poetess says, and sweetest in the gale is heard. And in the gale, when there is a difficult time, the bird sings the sweetest. That means the hope seems us the sweetest. In difficult times, hope offers the greatest comfort. जितने हम ज्यादा तनाव में होंगे, मुसीबत में होंगे, और उस समय हमें जो आशा मिलती है या आशा की किरण दिखाई देती है, we really feel very good that time. The next line is, and sore must be the storm that could abash the little bird. और जरूर that could abash, वो जो the storm, the difficulty must be very sore, very severe, बहुत ही तीव्र, very painful. जरूर वो difficulty, वह जो मुसीबत है, वह बहुत ही कठिन होगी. ओके, जो मेरी आवाज बंद कर सके, which will abash, which will keep quiet the little bird, which will keep quiet or make uneasy the little bird. The little bird means the hope, which will deprive you of the hope. जो आपको उम्मीद ना दिला सके, वह परिस्थिति जरूर ही बहुत कठिन होगी. What does it mean? यानी hope is not easily defeated. यानी आसानी से हम उम्मीद छोड़ते नहीं हैं. That means it is very, very difficult to give up the hope, or hope is always with us, however difficult the situation is. The sore must be the storm. The storm represents difficulty or the difficult situation. Okay, वह situation, that difficulty must be very sore. वह the storm यानी जो difficult condition है, वह बहुत ही severe या तीव्र होगी, जिसमें the little bird, that is the hope, abashes. That means the hope keeps quiet or we lose our hope. ऐसी बहुत ही कठिन परिस्थिति हुई जिसमें हम अपनी उम्मीद खोते हैं. What does it imply? यानी हम उम्मीद खोना इतना आसान नहीं है, या उम्मीद या hope is not easily defeated. उम्मीद हमें हारने नहीं देती है. समझ में आई बात? Yes. The next is that kept so many warm, and that again refers to hope. यानी that ये जो word है, it refers to the hope. Hope kept so many warm. Warm, that is it consoled, it comforted. यानी hope ने, उम्मीद ने बहुत लोगों को, many people, okay, it has kept them warm. उन्होंने डिफिकल्टीज में लोगों को बहुत कंफर्ट दिया है. जब भी हमें कोई मुसीबत होती है, एंड व्हेन वी हैव सम होप, यस वी कैन बी सक्सेसफुल, तो हमें एक तरह की सहन शक्ति मिलती है. वी कैन टॉलरेट द थिंग्स, वी कैन कैरी ऑन with all the difficulties successfully, and we overcome all the difficulties.
So now in the third stanza, the poetess for the first time, she refers the word I. Okay, what does it indicate? That now she is saying to us that she herself has experienced that whenever she faces a very tough time in her life, she can feel, she can experience the hope in her heart. And so the poetess says, I have heard it. It means what? Hope, the bird of hope. Okay, मैंने खुद ने सुना है वो गाना, the song which hope sings. In the chillest land and on the strangest sea. Now again, the chillest land, that means the coolest place, or the strangest sea, यानी एकदम weirdest sea, यानी एकदम अजीब सा बर्ताव है सी का. Now don't take the words literally. Okay, both these phrases, they represent the toughest time. ये दोनों भी जो शब्द है, okay, these phrases, उसका मीनिंग है the toughest time in life. यानी जिंदगी में जो बहुत ही मुसीबत भरे दिन होते हैं, that it refers to. So what she says, whenever I face the toughest time in my life, जब भी मुझ पर एकदम बहुत से बहुत बड़ी मुसीबत में मैं हूं, I have heard it, I have experienced, I have felt that there is the hope bird which sings in my heart. I can hear, जो है उम्मीद, वो मैं महसूस कर पाती हूँ, और उसके कारण I can overcome the difficulties. Yet never in extremity it asked a crumb of me. जो last lines are, they are very, very touching. What the poetess says, that the hope is like a bird. Okay, the bird perches on a branch. Okay, the hope perches in a pool. बर्ड जैसे कोई टहनी पर बैठता है, तो आशा उम्मीद का जो पंछी है वो हमारे सोल में है, हमारी आत्मा में है. जैसे पंछी गाता है, वैसे उम्मीद का पंछी भी गाना गाता है. ओके, इट डज नॉट हैव वर्ड्स, हम वर्ड से उसको बयान नहीं कर सकते हैं. सो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बर्ड, जो भी बर्ड के सारी विशेषता है, वह होप में है, वह आशा में है. बट इफ देयर इज अ बर्ड, यू हैव टू फीड इट. अगर कोई दूसरा वाला पक्षी है तो उसको आपको दाने डालने पड़ते हैं. यू हैव टू फीड इट. उसको कुछ न कुछ तो अनाज के दाने आपको डालने पड़ते हैं. पर ये जो आशा का जो पंछी है, इट इज सो स्ट्रेंज, ये इतना अलग वाला है. इट आस्क्ड अ क्रम्ब ऑफ मी. नेवर इन एक्सट्रीमिटी. एक्सट्रीमिटी वर्स्ट ऑफ द सिचुएशन, यानी सबसे कितनी भी बुरी कंडीशन क्यों न हो, उसने मुझसे आज तक अनाज का एक दाना भी मांगा नहीं है. क्रम, क्रम यानी कोई कण, अनाज का उसने कण भी मुझसे रिटर्न में मांगा नहीं है. यानी होप डज नॉट आस्क फॉर एनीथिंग इन रिटर्न. यानी उम्मीद हमें बहुत कुछ देती है. द होप गिव्स अस अ स्ट्रेंथ. होप हमें एक शक्ति देती है. किसकी शक्ति देती है? कि हम जो भी परिस्थिति है उसमें उसे हम झेल सके. दैट वी कैन फेस द सिचुएशन, ओके, एंड ओवरकम सक्सेसफुली. होप इंस्पायर्स अस. उम्मीद क्या करती है? हमें इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है फॉर हार्ड वर्क, फॉर परसिवरेंस. वह हमें उम्मीद देती है कि नहीं भाई, हार्ड वर्क करो, एक न एक दिन आपको द सिचुएशन विल चेंज. पर इतना सब वह देती है हमें, बट इट डज नॉट, इतना सब कुछ देने के बावजूद इट डज नॉट आस्क एनीथिंग इन रिटर्न. हमें उसे कुछ देने की जरूरत नहीं है. What does it implies? उसका मतलब क्या है? It costs nothing to maintain hope. और इसीलिए अगर हम आशावादी रहते हैं तो उसके लिए हमें कोई भी कीमत गिनने की जरूरत नहीं है. हमारा लाभ ही है अगर हम आशावादी रहते हैं. So in this way, a beautiful poem on a hope, that hope is life. और people say उम्मीद से दुनिया कायम है, and the poetess has described it very beautifully. Here
We end this poem. In the next session, we shall do the question answers. Thank you.